We are live now. Good afternoon, dear friends. Today, dear friends, a very good afternoon to all of you. Today, we have with us Mr. Kumar Sanjay, the renowned library professional, and the topic of the session is cooperation and coordination among libraries. So, before handing over the session to our distinguished speaker, I would like to mention in brief his details, his achievements. Shri Kumar Sanjay, presently working as Director Library, Niti Aayog. He has done MSc Physics, MPhil in Library and Information Science, and MCA. Shri Kumar Sanjay ji also pursuing his PhD from Department of Library and Information Science, University of Delhi. Shri Kumar Sanjay has more than 23 years of experience in various institutions and government organizations. Apart from this, he has published many articles in various national and international journals, and he has worked and working on various projects also. Now, I'm handing over the session to Shri Kumar Sanjay ji. Sir, you can start your session. Thank you. Dr. David, and good afternoon to all. Indeed, it's my great pleasure that Ramanujam College has given me the opportunity to speak to you all this afternoon. Therefore, I am very thankful to the authority of the Ramanujam College who has given the platform to share my ideas with you. In recent years, we have all witnessed a significant increase in the use of e-resources and a decrease in the footfall in the library. That is, the library has transformed from the traditional to the modern. And therefore, we must change our mindset from the traditional activity to the modern activity, to the traditional librarianship to the modern librarianship. We have seen that library professionals are doing their jobs based on the previous work and process, but we should have to update the knowledge. Now let me present my presentation. Let me share this one. This is my topic is cooperation and coordination among college libraries. Okay. So you know that the change is the law of the nature, and we have to do the work according to the nature. So बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, और हमें उस प्रकृति के नियम के अनुसार जैसे जैसे बदलाव होता है हमें अपने आप को बदलते रहना पड़ता है. अगर हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तो certainly we will fall in the problem, or you can say Mahatma Gandhi has already said this statement, this constant development is the law of life. So development is the process, and the continuous process, and those who are in the dilemma that the traditional part will retain forever, that is, then he said that, and a man who always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position. So we have to think over this problem and change according to the
technology, that like the library professionals should update their knowledge according to the modern technology, whatever the modern technology is. Otherwise, the other professional will take the place in place of library professionals. Marshall McLuhan has told this, that it is foolish to do today's job with yesterday's tools and yesterday's concepts. So, in the present environment, in the digital era, in this part, what we have to do, we have to think the today's tools, with the today's technology, the today's process, how to change our system. So, in my topic, there are two words, cooperation and coordination. Now, coordination is, you know, that coordination, it is a managerial activity that correlates and integrates all the activities and goals of an organization. That is, it is a continuous process. So, coordination is a managerial activity, that is, it can be done by the head of the institution or head of the vertical, head of the section. However, the cooperation is the collective effort made by individuals to achieve a common goal. That is, दोनों एक ही टाइप में है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, केवल थोड़ा सा डिफरेंसेस ये आ जाता है कि एक्टिविटी जो है जब हाई लेवल में किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जब कोई एक्टिविटी और कुछ पार्ट डिसीजन लिया जाता है, काम किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है एक्टिविटी को, देन इट विल बिकम द कोऑर्डिनेशन. और जब टीम लेवल, दैट इज द टीम इंडिया जैसे कहते हैं, टीम इंडिया है, सो टीम वर्क, टीम एफर्ट, इट इज कॉल्ड कोऑपरेशन. So effective coordination cannot be achieved without cooperation. Both are complement to each other. So a manager or the library professional should try to achieve both coordination and cooperation. And therefore we say that the coordination and cooperation are two wheels of a bicycle. If any one wheel is missing, then the bicycle cannot function. Similarly, both coordination and cooperation are necessary for an organization. Even we say that in our library, the head of the library or the library in charge, the librarian, should have the ability to take the decision, to coordinate with other library professionals from other libraries. And the staff of that is the subordinate of the librarian, they should have to cooperate to the librarian, and they should cooperate to each library professionals. I'm talking about in a single library. However, it can be integrated to the multiple libraries also. Therefore, it required that we should have a coordination and cooperation among us. So the question is, what is the differences between this coordination and cooperation? If there is a similarity, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो डिफरेंसेस कहां पे आता है? So coordination क्या होता है? Coordination involves organizing and synchronizing individual effort towards a common goal, while cooperation entails working together and sharing resources to achieve mutual objectives. Another one is coordination focuses on harmonizing action, while cooperation emphasizes collaboration and joint participation. Or, which I have already told you, that this coordination is performed by the top management, and this cooperation may be at any level. So this is the differences. Now, what are the similarities? That is, it means to say cooperation, we have the teamwork. It means to say, when we say cooperation, that is Ranganathan, or one thing I want to say here, that whatever the library professionals are doing, they are doing
on the basis of 5 laws of library science, which we already know. And ये जो 5 सूत्री ये जो नियम है जो दिया हुआ रंगनाथन जी का, it will work always, हमेशा ही यह काम करेगा और उसी पे ही हमारा सारा बेस्ड है। आज से 50 इयर्स बैक भी रिसोर्स शेयरिंग की बात हो रही थी, उन्होंने दिया था रिसोर्स शेयरिंग की बात, और आज भी रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर ही जो है हमारा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारी बातें जो भी नई नई टर्मिनोलॉजी वी आर इवॉल्विंग फॉर दिस वन, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिनिटी, देखिए की 3 ही चीज है ट्रिनिटी में, एक तो डॉक्यूमेंट है, दूसरा लाइब्रेरी प्रोफेशनल और तीसरा यूजर है। इसी 3 के इर्द गिर्द हमारा सारा चीज घूमता है, चाहे जो भी प्रोसेस करें, प्रोसेस मैंने प्रोसीजर अपनाए, we have to be in between the source and the receiver. तो यहाँ दोनों के बीच में जो है हम मीडिएटर के तरह काम करते हैं और हमें जो है वो पहुंचाना, दैट इज at any cost. If the resources are not available in the library, we have to take care of these things, and with the cooperation or networking of library professionals, we can take the document from other library and provide it to our user. So what is the similarities between coordination and cooperation? That is, both involve working towards achieving a common goal, and both require effective communication and information sharing. So information sharing, resource sharing, document sharing, both contribute to efficient resource utilization. Question is, why resource sharing? कहते हैं एक अकेला काफी नहीं होता, उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेस नहीं हो सकते कि वो अपने यूजर के सारे डिमांड को पूरा कर सके, और उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं जो कि उसके यूजर को नहीं भी चाहिए उतने भी बचे हुए हैं. So the utilization of the resources, or you can say optimum utilization of the resources, we should have disclosed the collection of our resources to others also, so that other people from outside the organization, they know these type of resources or these kind of resources are available in that library. Therefore, the goal of the resource sharing will achieve. So both can enhance teamwork and collaboration. Both aim to minimize conflicts and promote harmonious interactions. Both require mutual understanding and coordination among participants. So these are the similarities you will find in the coordination and cooperation. So here one word is the main, teamwork. So teamwork kya hai? What do you mean by teamwork? That is when we come together for a beginning, for something doing. जब हम एक साथ मिलते हैं और किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो वो हमारा टीम वर्क कहलाता है. हेनरी फोर्ड जो है, उन्होंने कहा था, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, and working together is success. So teamwork is working together, and whenever we work together, the success will certainly achieve. So now we should come in our, that is, library part, the academic library, the college library. You all know that each and every library of a college, different colleges, they house their own libraries and they are isolated from other libraries.
I think you all are agree with me, because the library of one college and the library of another college, there is no any, you can say, relation in between them. Even the same building, the morning and evening colleges also have, there is no any relation of the resource sharing and the other thing. So जो आइसोलेटेड लाइब्रेरी सिस्टम होता है इस कॉलेज का, इट इज वेरी सिंपल मॉडल, बिकॉज एक लाइब्रेरी अपना काम कर रही है, सारे अपने 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 जो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सबकी, द कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इसका इट हैज मेनी लिमिटेशंस। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? Expensive and provide limited services. Duplicity of information resources. Non-uniform cataloging system and software. You know that एक लाइब्रेरी आज के डेट में ही अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है वो अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, एक कॉलेज लाइब्रेरी अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, दूसरा कॉलेज लाइब्रेरी अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। सो नॉन यूनिफॉर्मिटी है। जब हम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं 100% अचीव हो, और अचीव तभी होगा जब हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हम काम करेंगे। ये कॉमन होना चाहिए। तो these are the limitation. The problems drive the need of cooperation and coordination among college library system to provide better user experience. क्या problem है? Then it is the shrinking budget, decreasing footfall in the library premises, rising costs of books and periodicals, and lagging behind in fulfilling the requirement of patrons in this digital age. So these are the existing library system in college libraries में you will find that each college has its own in-house library system, own localized database repository hosted in own data center, houses important textbook, reference books, reports, papers and magazines used by students and faculty. Discovery of resources restricted to users of college only. Content, technology and their outreach limited to a small group of people internal to college. So individual library has its own catalog system and own data format. So these are the points I am mentioning here for the existing system of the college library system. And you will see the architecture. This is the architecture. देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि XYZ ये अलग अलग कॉलेज सिस्टम है, सबका अपना डेटाबेस है, उसका अपना वेब इंटरफेस है, किसी का है नहीं भी है, किसी ने अपना पोर्टल बना रखा है नहीं भी बना रखा है, और सारे अलग अलग है. You will find that there is no any interconnectivity in between these colleges. So तो ये जो है सारे अपने अपने अपनी डफली अपना राग अपना अलापने से इसको जो है हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है, जो रिसोर्स शेयरिंग की बात है, वो अचीव नहीं हो पाती है. तो वी हैव टू थिंक ओवर दिस एंड शुड चेंज द आर्किटेक्चर. तो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं? तो लिमिटेशन ये है कि ईच लाइब्रेरी सिस्टम आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर लाइब्रेरी सिस्टम. देयर इज नॉन यूनिफॉर्म कैटलॉग सिस्टम. मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई यूज कर रहा है कोहा सॉफ्टवेयर, कोई यूज कर रहा है लिप्सिस सॉफ्टवेयर, कोई जो है
स्लिम यूज कर रहे हैं. So even in University of Delhi, so all the affiliated colleges, you will find that different softwares, library application softwares are using by different colleges or institutions. Here, inefficient way of discovery of resources leads to rework and reproduction of content report. Inefficient, inactive way of sharing resources. क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग नहीं हो पा रहा है. जब हमारी आइडेंटिटी इंडिविजुअल है, जब हमारे बीच में कोई कॉपरेशन नहीं है, तो हाउ कैन वी नो दैट what are the resources available in X library or Y library? So it is the personal relation by which you can call the person and ask them ki, is it document available in your library? And there is no any policy regarding this one. So leads to duplicity of library resources. और एक ही चीज है, जैसे सपोज करें कि भाई एक मॉर्निंग कॉलेज है, इवनिंग कॉलेज है, और हमारी जो बजट है, वो बजट का मैक्सिमम जो है, कहेंगे कि भाई हाँ, डुप्लीकेट रिसोर्सेस में ज्यादा खर्च होते हैं. जैसे रेफरेंस बुक ही लेना है, रेफरेंस बुक्स अगर कंसल्ट करने की बात है, तो वो क्या होता है कि हमारा रिसोर्सेस में ज्यादा खर्च हो रहा है. वी कैन मिनिमाइज दीज थिंग्स. इंडिविजुअल डाटा सेंटर सेटअप and duplicity in resource procurement increases overall cost to government. Access and outreach restricted to smaller group. So for this, what we have to do, what the library professionals should do. Here comes, that is the role of library professionals who are working in the library. There should be change in the mindset of the library professional. Change of traditional work, routine work to the intellectual work. आपको एक रूटीन टाइप का काम, जिसको कहते हैं क्लरिकल जॉब, इट इज नॉट, आई एम टेलिंग बिकॉज ये जो है एक सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल में जो है, वो तो एक रूटीन वर्क ही चलता है. लेकिन अगर टॉप लेवल भी रूटीन वर्क में ही इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो ज्यादा सही नहीं है. इट शुड बी फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्क और रूटीन वर्क टू द इंटेलेक्चुअल वर्क, एंड दे शुड हैव अ नॉलेज प्रोफेशनल by moving from the background to the center of the organizational state, to jointly hold the reins of knowledge management with users and the technology experts. They should be able to extract, filter, and disseminate vital external knowledge to the recipient, those who require those knowledge. तो यहाँ पे एक टू वे में काम करना पड़ता है. पहले हमें ये भी देखना है कि हमारे जो यूजर है, दैट इज द फैकल्टी है, प्रिंसिपल है, और जो रिसर्चर है, जैसे यूनिवर्सिटी में रिसर्चर है, सो व्हाट दे नीड फॉर, ऑन द बेसिस ऑफ on the examination, the need of the user, we should have to provide them. They will work with users in collecting and analyzing strategic intelligence, and to act as trainers and consultants to transfer knowledge gathering and research skills throughout the organization. तो जब आप देखेंगे कि पहले रंगनाथन सर के टाइम से लेके आप अभी के टाइम में देखिए कि टाइम जो है कंटिन्यूअस धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और हमारा जो वर्किंग कल्चर है वो भी चेंज हो रहा है. बिकॉज पहले कंप्यूटर जो हमारा था और आज का जो कंप्यूटर और मोबाइल है, ये सारा, तो आप यह कह सकते हो कि टाइम जो है ना, वेरी फास्ट चेंज हो रहा है. वो क्या, हमारे प्रोसेस को चेंज कर रहा है, और वी हैव टू मेंटेन द पेस विद द चेंजिंग टाइम्स. वो कहते हैं ना, समय
जैसे लॉर्ड कृष्णा के पार्ट में, दैट इज टाइम एज ए फीचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा destroys everything. In our day-to-day experience, we can see how everything deteriorates with time. अब देखो कुछ नहीं, सबका जो भी जिसका भी हुआ है, जन्म हुआ है, उसका मृत्यु निश्चित है। तो एक क्या होता है कि समय के अनुसार धीरे 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 वो खत्म हो जाता है। सो एवरीथिंग एंड एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द cruel laws of time. And you have heard the quotation about this, that is, time and tide wait for none. तो वो किसी का भी इंतजार नहीं करता है। And we should have also respect the time and use the time to improve the our system. इसके लिए हमें continuously we have to work together. That is teamwork. Or when you say that is work, कर्म। भागवत गीता में भी सबसे पहले जो है कर्म की प्रधानता दी गई है। तो we have to do the कर्म for this one. Now come to the driving factors. What are the driving factors for this cooperation and coordination among libraries? So the number one, we can say, duplicity of resources, to minimize the duplicity of resources. Resources, not even that only that books, duplicity of books, titles, not only that. आपको अगर खरीदना भी है, आप खरीद भी रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर सेम सिस्टम में आप कहीं कैटलॉग कर रहे हो और वही सिस्टम आप दूसरी लाइब्रेरी भी यूज कर रही है, तो जो वर्क, जो मैन पावर यूज होता है, सेम अगर बुक वो कैटलॉग जो है उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो मैन पावर है वो भी सेव होगा। Therefore, not only the resources, duplicity of resources, duplicity of the manpower will also be minimized. Infrastructure cost reduce होगा। और जब हम एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो certainly you can say develop our consortia. Like आप लोग का, जैसे कि आप देखेंगे कि पूरे यूनिवर्सिटी लेवल में इन्फीबनेट जो है कोई कंसोर्शियम मॉडल पे काम कर रहा है, और आप लोगों को वो जैसे कि ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है एनलिस्ट, यू आर यूजिंग दिस एनलिस्ट। सो वन पार्ट ऑफ दिस रिसोर्स शेयरिंग और कोऑपरेशन इज that is एनलिस्ट databases are being provided by the consortia. Online access to uniform catalog of resources to everyone. अभी क्या है कि मान लीजिए हर कॉलेज की अपनी अपनी कैटलॉग है, अपने पार्ट है, किसी का कंप्लीटली कैटलॉग जो है पोर्टल पे अवेलेबल है, एनीबडी कैन एक्सेस, किसी का नहीं है, किसी का केवल कॉलेज लेवल में है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए कि अगर ये देखना है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट, ये रिपोर्ट, या जैसे एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपके यहाँ नहीं है, तो किसके पास है, किस कॉलेज की लाइब्रेरी में है, तो देयर इज नीड फॉर द यूनियन कैटलॉग। और हमारा यहाँ यूनियन कैटलॉग है नहीं, जैसे कि डेलनेट ने तैयार किया हुआ है यूनियन कैटलॉग, ऑल द 5000 लाइब्रेरीज कैटलॉग। So the similar kind, the college libraries, even the you can start with the 2-3 college libraries and create a network and then a platform for the union catalog.
make required resources available and reduce rework for research scholar, faster and timely access of resources, make resources available anybody to anybody anywhere at any time, 24/7 through mobile app. So here we see that the collaboration needs among colleges. Then it will only be possible. But question is how we can do this one. So how can we achieve the cooperation and coordination among libraries? From my point of view, I have divided it into three parts. One is the integrating libraries through common catalog. Another one is the infrastructure, IT infrastructure, and third one is the e-resources subscription and a new value-added service. So on the basis of 3 points, we can achieve the objective of cooperation and coordination. So how can this integration? Migrating all information about resources on a common platform, create common uniform catalog across colleges, and it will only be possible when we should use a common library software. There is a possibility, but in that possibility, real-time updation will not be possible. जब आप एक ही डाटाबेस अगर यूज करते हैं, एक डाटाबेस एंड डिफरेंट लाइब्रेरी, एक ही सॉफ्टवेयर, मान लीजिए हम एक एग्जांपल सिंपल सा कहते हैं कोहा का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं मल्टीपल लाइब्रेरीज के थ्रू, so each library can use that software for their own library, but a union catalog will be prepared accordingly. वहां पे हर का अपना अपना पेज होगा और उसके थ्रू डाटाबेस एक होगा. जब एक्सेसिबिलिटी देखी जाएगी, सर्चिंग की जाएगी, तो रिजल्ट जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको बताएगा कि कौन सा ये डॉक्यूमेंट किस किस लाइब्रेरी में अवेलेबल है. So those libraries which are nearer to you, you may ask the library professional to provide you those documents. तो ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन हुआ. So despite a scattered at physical location, library resources will be accessible at one digital location. एक ही जगह से जो है ये accessible हो जाएगा. Non-copyright resources can be available online for anyone, accessing it from anywhere at any time. तो रिमोट एक्सेस, आज के डेट में रिमोट एक्सेस फैसिलिटी दी जा रही है. मोबाइल ऐप के थ्रू जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्कवरी सर्च दी जा रही है. सो आप केवल अपने लाइब्रेरी में डिस्कवरी सर्च लेके भी कोई खास फायदा नहीं कर पाएंगे. अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तभी होगा. इट्स बेटर कि अगर कलेक्टिव इफर्ट लगाया जाए तो certainly you will get the result according to your need. Next is IT infrastructure. A robust IT infrastructure supported by common data center. Here I am telling you common data center, it means to say all the participating libraries in this cooperation and coordination. That is, you can say we can do the network. So एक डाटा सेंटर होगा, उस जो भी है 2 है 4 है 5 है 10 है जितने भी हैं, उस सबका एक डाटा सेंटर होगा. उस डाटा सेंटर में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो रोबस्ट होगा. allow seamless user experience, ensure data protection through blanket security firewalls, user authentication system deployed in cooperation with libraries, consortium and publisher. So authentication system, अगर हम user authentication system नहीं देंगे तो certainly we will violate the copyright rule.
एंड हमारा जो भी है, बिकॉज जो हमारे बोनाफाइड मेंबर होते हैं दे आर ओनली एलिजिबल टू यूज आवर ई रिसोर्सेज सब्सक्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. And the next is help in running online learning and development courses across colleges. So the second is IT infrastructure. Third is software and e-resource subscription and new value-added service. जब आप एक मान लीजिए कोई रिसोर्सेस एक खरीद रहा है, अब इसे देखिए कि SRCC है, बगल में दौलत राम कॉलेज है. अगर SRCC मेनली इकोनॉमिक्स पे ज्यादा बेस्ड है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी जो भी होंगे उसको वहां लिया जा सकता है. अगर दौलत राम ह्यूमैनिटीज पे है सो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड अगर डाटाबेस कुछ है तो वहां अगर ले ले. और बिकॉज द कैंपस इज हार्डली 100 मीटर, तो आप कोई भी यहाँ का यूजर वहां जा सकता है, वहां का यूजर यहाँ आ सकता है और यूज कर सकता है. बट वो तभी कर सकता है जबकि हमारी अपनी एक पॉलिसी हो, हम यूज करने के लिए उनको दें. तो bring in cost, great cost efficiency, bulk purchase of resources reduces cost. जब आप कंसोर्शिया मेथड के थ्रू परचेज करेंगे तो सडनली कॉस्ट जो है रिड्यूस हो जाएगा. मान लीजिए कि ईच एंड एवरी लाइब्रेरी जो है टेक्स्ट बुक तो ले ही रही है, कंसोर्शिया के थ्रू लीजिए तो जो है 10% और भी, जो मान लीजिए नंबर ऑफ कॉपीज जो है हर लाइब्रेरी 10-10 कॉपी खरीद रही है, टाटा मैग्रो हिल की जो है 10 कॉपी खरीद रही है. हो सकता है कि उसमें जो है 3-4% एक्स्ट्रा हमें रिबेट मिले अगर हम कहते हैं नहीं एक साथ मुझे जो है 300 कॉपी चाहिए, एंड देन वी विल सर्कुलेट इट दिस वन. तो ये एक होता है कि हाउ कैन वी मिनिमाइज द कॉस्ट. सेटअप कॉमन डाटा सेंटर ऑन क्लाउड, मिनिमाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट. हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखने की जरूरत नहीं है. वी कैन गो टू द क्लाउड, वहां क्लाउड पे जाके हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और ये 24/7 फ्रॉम एनीवेयर वी कैन एक्सेस आवर कैटलॉग. बिकॉज अगर हम अपने पास रखते हैं तो उसके जो AMC है, उसकी जो मेंटेनेंस है, उस पे जो रिस्क है वो हम पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते हैं. जबकि हम अगर क्लाउड में रहते हैं तो टोटल मेंटेनेंस पार्ट ये सब जो है उस वेंडर का काम होता है जो हमें डिजिटल स्पेस प्रोवाइड करता है. आर्काइव सब्सक्राइब मटेरियल एट ए कॉमन प्लेस. एक कॉमन प्लेस पे हम जो है मटेरियल, सब्सक्राइब मटेरियल को आर्काइव कर सकते हैं. मिनिमाइज डाटा लॉस एंड प्रोटेक्ट डाटा लीकेज. डाटा लॉस को भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डाटा लीकेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यूनिफाइड लाइब्रेरी सिस्टम यूजिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज कॉस्ट इफेक्टिव. Now the proposed model for the library system, you will see here. मैंने वहां पे दिखाया था कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सबका. यहाँ देखिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है और कॉमन प्लेटफॉर्म भी है जहां पे कि कॉमन इंटरफेस भी है. और जो डाटाबेस है वो डाटाबेस क्लाउड पे है. तो सबको यह जो है अपना महसूस होगा और सबको यह इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, साथ में कोलैबोरेटिव भी जो है ये शो करेगा. यू विल सी दिस इज कॉमन वेब एंड मोबाइल इंटरफेस. यह जो है यहाँ पे आपका चीज है जो कि हर यूजर उससे जुड़ा हुआ है. So for this cooperation and coordination among libraries, the proposed architecture is like this one. तो कैसे करेंगे वहां पे मैंने 3 स्टेप बताया. यहाँ इसी चीज को कहते हैं दैट इज मिनिमाइज रिसोर्स डुप्लीकेशन.
online discovery of resources through uniform catalog. So there are two types of सर्चिंग सिस्टम होता है, जैसे कि डिस्कवरी सर्च होता है, फेडरेटेड सर्च होता है। तो उसमें क्या होता है, जस्ट whatever you will use, there is no problem. Whatever the resources you are subscribing or you have, so by this discovery or federated search, you will get the result at single place. जैसे कि आप देखेंगे गूगल में आपका सर्च करते हैं तो आपको सारी जगह से लाके देता है, चाहे इमेजेस हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे टेक्स्ट हो, वो सारा आपको लाके देता है। तो यहाँ जो आपका सारा रिसोर्सेस है, उस सारे रिसोर्सेस से डिस्कवरी के द्वारा जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा। कोलैबोरेट एंड शेयर कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी अमंग कॉलेजेस। तो यहाँ पे नॉट ओनली दैट की रिसोर्सेस, दैट इज द कंटेंट रिसोर्सेस भी यही हम लोग शेयर कर सकते हैं। हम मैन पावर रिसोर्सेस, एक्सपर्टीज रिसोर्सेस को भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम हमारी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल ऐसा है जिसको कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे, मान लीजिए अभी आज के डेट में जैसे पोहा चल रहा है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। If we are procuring the software, proprietary software, then the AMC will be given to those proprietary software. उसका कॉस्ट अलग जाता है, तो वो तो खैर वो मेंटेन करेगा। लेकिन अगर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल पोहा, और हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट है और उसे किसी दूसरे लाइब्रेरी में किसी को जरूरत है कुछ जानकारी का, तो वो उसे मदद करेगा। हियर इज द कॉपरेशन। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे कॉपरेट कर रहे हैं। सो कॉपरेशन हर लेवल में हो सकता है, कंटेंट लेवल में, टेक्नोलॉजी लेवल में, मैन पावर लेवल में। एक जगह अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और वो नया सेटअप करने जा रहे हैं और हम अभी पुराने हैं, तो वी कैन ट्रेन देम ऑल्सो। उनके स्टाफ को बुला के हम अपने यहाँ पे ट्रेनिंग दे देंगे, चलिए 3-4 दिन 5 दिन भेज दीजिए, मैं यहाँ पे सारा ट्रेनिंग दे देंगे। तो कॉपरेशन जो है या कोऑर्डिनेशन किस लेवल पे हो सकता है, हमें सोचना है कि इससे हमें फायदा उठाना है कि नहीं उठाना है, या हम अपने केवल इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ही बरकरार रखना चाहते हैं। एक टाइम आएगा जिस समय कि यह जो डिमांड होगा, लोगों को यह जरूरत महसूस होगी, नहीं ये होना चाहिए। ये जरूरत महसूस हुई तभी तो इन्फ्लिमनेट का जो है गठन हुआ था और उसके बाद जो ये कंसोर्शिया के टाइप बना था। उसी तरह से हालांकि ऑब्जेक्टिव था पहले भी, इन्फ्लिमनेट ने सोल डेवलप किया। सोल का फंक्शन यही था कि भाई सारे जो एकेडमिक कॉलेज लाइब्रेरीज हैं ये सारे जो है उसको यूज करेंगे, लेकिन नहीं यूज कर रहे हैं। सबका लिमिटेशन है, तो हमें जो है उस चीज पे भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमें एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कुछ चीज को छोड़ना पड़ेगा, कुछ के साथ जो है बातें करनी पड़ेगी। एक नेटवर्क जो है इसके अनुसार हमको डेवलप करेंगे, तभी जाके हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, एम को अचीव कर पाएंगे। हमारा विजन क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। तो collaborate and share content technology among colleges, reduce overall cost by setting up common data center। अगर एक डाटा सेंटर हो गया, एक क्लाउड पे हो गया, मैंने आपको बताया था पहले, यहाँ पे जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है, एक सिंगल डाटाबेस है, मल्टीपल लाइब्रेरीज है, रियल टाइम यूनियन कैटलॉग तैयार होता रहेगा। जो भी एंट्री करेगा उसको पता चलेगा कि भाई उसका अपना आइडेंटिटी तो है ही, साथ में हमारा एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी तैयार हो रहा है।
increase efficiency of researchers through making important reports and content available to them and prevent them for reinventing the wheel. Similarly, जैसे कि हम यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं, उसी तरह से एक डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल रिपोजिटरी हम तैयार कर सकते हैं, वो भी कलेक्टिव डिजिटल रिपोजिटरी तैयार कर सकते हैं. So whatever the resources or digital resources each library has, they will be permitted to upload the documents. So each and every library के पास अपना एक जो है user ID password होगा to upload the document. At least मैंने ये होगा कि सारे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है वो सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा. अभी वो है नहीं. अगर कोई यूज कर भी रहे हैं, नहीं मैक्सिमम लोग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अगर कर भी रहे हैं, उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनके यहाँ पे जो मान लीजिए कि हाँ पुराने क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जो आए हुए हैं उसको वो स्कैन करके डिजिटल करके वो अपलोड करते हैं. दैट इज नॉट एनफ. तो नेक्स्ट वन इज increase efficiency of researchers through making important reports and content available to them and prevent them from the reinventing the wheel. Provide access to resources and increase their outreach to broader group through omni channels, that is web app and mobile app के through जो है कोई भी कहीं से access कर सकता है. Improve data and information security. And therefore I am telling you कि we need a network among college libraries. And the vision is one university, one library system. And integration of all college libraries of university for optimum utilization of information resources. तो विजन यहाँ पे हमारा एक ये है कि वन यूनिवर्सिटी वन लाइब्रेरी सिस्टम. और क्या करना है इस जो कॉलेज लाइब्रेरीज हैं, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए वी कैन स्टार्ट दिस. सो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कॉलेज लाइब्रेरीज ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. मिशन क्या है? सेटअप क्या होना चाहिए? सेटअप एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस कॉलेजेस अंडर वन यूनिवर्सिटी. एक यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेज आ रहे हैं उसको हमको सारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना देना है. ये होने के बाद जो एक रिवॉल्यूशन हो सकता है कि हमारा सिस्टम में हो जाए, हमारी जो नीड है वो फुलफिल होना हो जाए. To achieve optimum utilization of the information resources, पर्पस जो हमारा ना कि टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, दैट इज एडवांसेस इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड telecommunication technology have revolutionized the way in which information is required, stored, accessed and transferred. So पहले जो होता था और आज जो हो रहा है दोनों में काफी अंतर है. दिस इज ड्यू टू द एडवांसेस इन कंप्यूटर सिस्टम. दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है. आप देखेंगे कि मतलब मोड ऑफ स्टोरेज, पहले कैसा कंप्यूटर होता था, आज के डेट में कैसा है, ये भी जो है आउटडेटेड हो जाता है, नया आ जाता है. This is sharing and subscribing electronic resources in a consortium way has rapidly become another important goal for libraries. देखिए कंसोर्शियम तो है जो कि इन्फ्लूनेट के थ्रू जो है आप लोग एनालिस्ट यूज कर रहे हैं. तो कंसोर्शियम तो आप यूज कर रहे हैं, उसको अब हमें एक और अपर लेवल में ले जाके कोई भी चीज जो परचेज होता है उसके थ्रू आपस में कोऑपरेशन करके एक नेटवर्किंग तैयार करके हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं
जिससे कि कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा और रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। ये ऑल कॉलेजेस ऑफ ए यूनिवर्सिटी। जो ये लाइब्रेरी नेटवर्क है जो होगा, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो हमारा क्या है कि पहला हम मान के चलते हैं कि एक यूनियन कैटलॉग जो होगा, सारे पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज का एक यूनियन कैटलॉग होना चाहिए। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी, क्रिएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ पार्टिसिपेटिंग नॉलेज रिसोर्सेज, जो मैंने अभी बताया कि एक मान लीजिए जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे लाइक डीएसपेस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू you can create common digital library. So every participating libraries will upload the documents, digitized documents, which are available with them. Resource sharing among participating libraries in a consortium model. Resource optimization for participating libraries. Transformation of traditional libraries to digital libraries. हमें अपने ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सिस्टम का जो हम वर्क कर रहे थे उसको आज के डेट में हम उस ढंग से नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, आप खुद जानते हैं, जब कैटलॉग हम बनाते थे तो हमें ये ध्यान होता था कि भाई सरनेम, कॉमा, फोरनेम, फिर टाइटल लिखना, उसको सेकंड इंटेंशन से स्टार्ट करना, इसको फर्स्ट इंटेंशन से स्टार्ट करना, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले जो है स्लैश डालना, वो सेमी कॉलन, डॉट, हाइफन, ये सारे वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो था। आज के डेट में आपको ये नहीं करना है। हैंड रिटन, किसी की राइटिंग कितनी भी खराब हो, कैटलॉग जो डाटा एंट्री होगा उसमें तो उसकी राइटिंग से कोई मतलब नहीं हो। You will see automation and networking of participating libraries of all colleges under one university. There should be a capacity building of participating library professionals. Creation of a common card system for users of the participating libraries. जब आप इसको करना चाहेंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, करना चाहेंगे, you can say there must be a committee. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर लाइब्रेरी, हमारे पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी होना चाहिए। मैन पावर डिप्लॉयमेंट फॉर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन, जो हमारा होगा उस जो हम टेक्नोलॉजी अप्लाई करने जा रहे हैं उस जगह पे जो रिक्वायर्ड मैन पावर है, जो एक्सपर्टीज है, वो हमें चाहिए। And we should not go for the proprietary software. We should deploy the open source library management software, whether it is content management or bibliographical data management. So we should use the open source library management software and the cloud-based library management software. Development and deployment of crosswalk and APIs for cloud-enabled libraries and information centers. जैसे कि अभी कहते हैं कि each libraries are using a different software and then we require a union catalog. We should use the API to fetch the data from different catalogs to put in a single place for updation of the union catalog. Or implementation of common card system for members of the participating libraries. Implementation strategy क्या होना चाहिए? Automation and networking of libraries and union catalog of libraries, यह होना चाहिए कि सारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो।
नेटवर्क में हो, यूनियन कैटलॉग तैयार हो जाए, सिंगल विंडो सर्च पोर्टल होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन सिस्टम होना चाहिए, सिंगल साइन ऑन सिस्टम फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज, कॉमन कार्ड सिस्टम फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग लाइब्रेरीज, digital library that is archived resources, subscribed e-resources, and local digital content of educational, scientific, social, and cultural heritage. Consortium of libraries and information centers. एक जैसे कमेटी बना उसी तरह से जो है एक प्लेस होना चाहिए कंसोर्शियम लाइब्रेरी का, जो इस सारी चीज को प्लेस नहीं हो तो एक ग्रुप जो है वो कमेटी जो है कहीं एक जगह वो बैठने अपना सोचने का, या एक जगह किसी लाइब्रेरी में बना दिया, ये एक सेंटर है. So the policy of this consortia, policy of this network will be handled from that place. तो ये चीज है कि हमारा by this way we can implement this library network. I'm working in the government of India, that is ministry, I'm in Niti Aayog, or we are also working on this integration part. ये इंटीग्रेशन पार्ट में यह है कि सारे मिनिस्ट्रीज की जो अलग अलग लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को इंटीग्रेट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ले आए, सिंगल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज करें, यहां तक कि कॉमन कार्ड सिस्टम यूज करें फॉर द इशू रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट. मिनिस्ट्री जितने भी मिनिस्ट्री हैं उसके जितने भी ऑफिसर हैं, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे कैन यूज द लाइब्रेरी फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी जो है वो लाइब्रेरी को यूज करें, उसको एक्सेस करें. साथ में अगर मान लीजिए कि वो किसी मिनिस्ट्री में गए, वहां की लाइब्रेरी को यूज किया, वहां देखा अरे ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, दे कैन टेक दैट डॉक्यूमेंट और put issued the document from there that place or return it in their own ministry. ये सारे उस सिस्टम में हमारा जैसे ही वो अपनी लाइब्रेरी में जाके रिटर्न करेगा तो डाटाबेस हमें बताएगा कि इस लाइब्रेरी की किताब है वो वहां पे रिटर्न हुई है, उस जगह पे रखी हुई है. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटेड सिस्टम हो सकता है. ये सारे फीचर्स जो है इसमें आ सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है सारा. और इंटीग्रेशन का फायदा ये होगा, एक तो कंसोर्शिया हमारा डेवलप होगा, दूसरा जो बजट है वो बजट अवेलेबल बजट में हम ज्यादा रिसोर्सेस प्रोक्योर कर पाएंगे, यूजर्स को ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कि जो मनी स्पेंड हुआ है उसके ऊपर में वो जस्टिफाई हो सके. तो these are the things. In concluding remark, I can say only cooperation and coordination are distinct yet interconnected concept. अलग-अलग हैं, but they are interconnected. That play crucial role in achieving common goals and fostering effective collaboration. The coordination focuses on aligning tasks, schedules, and activities to ensure smooth workflow and resource optimization, while cooperation emphasizes working together, sharing information, and building relationship to achieve shared objectives. Both coordination and cooperation are essential elements of successful teamwork. Understanding their differences
and similarities enables individuals and organizations to harness their benefits and facilitate productive and harmonious collective action. तो आप ये देखिए कि दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस ये कह सकते हैं कि एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, एक पहिए से काम नहीं चलेगा, ये कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ मूव करता है, बिकॉज द मैनेजरियल लेवल and the lower level both require, that is, coordination and cooperation for the improvement of the system, right? So in the last we can say our user भी आपको सबसे पहले जो है यह जानना जरूरी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, the only thing you to have to know is the location of the library. Okay, and thank you. Over to Dr. Baby. Thank you very much, Sanjay sir. Very informative session. I, on behalf of the whole organizing team, I thank you very much, sir. And I hope the participants will use this information, whatever you have given to your presentation, very useful for any library. Very important things you have mentioned during your presentation. How we can coordinate among our libraries and among our staff members. So thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Any question answer? Sir, this is a live session actually. So okay, so is there any question in the chat box? No, sir, I'm not seeing any questions and anything. Sir, participants are seeing through live session on YouTube. Okay. Ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You can leave, sir. Sure, sure.